Yes, sir, your screen is visible. सही. So should I start? Yes, sir, you can start. चलिए, शुक्रिया. तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम अरसलान है. आई वुड बी स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू जैसा मौका लगेगा. तो पहले तो it's really a very nice feeling to see so many people online, to hear people talking about IC design. So when I came back in Pakistan after my PhD back in 2009, we really had to run after people and convince them कि भाई मेरी बात तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ. So a lot of people actually used to make fun of us, and it was actually very easy at that time. So मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. जैसे डॉक्टर हसन ने बड़ी इंप्रेसिव किस्म की प्रोग्रेस, और राशिद रमज़ान ज़रा ऑब्वियसली मेरे तो बहुत पुराने सीनियर हैं. when I got my first job after my graduation with Dr. Shoaib in his Pakistani Design Center of the American company, perhaps the first American company that was working on digital microchips back in 2001. So Rashid Saab was my senior the. So we almost went together for our MS and PhD to Europe, and then I think I came back after 1 year when he came back to Pakistan. So बहुत पुराना connection है. Just the only thing that keeps us apart is like he's sitting in Islamabad and I'm down south in Karachi. So मैं आज कोशिश करूँगा. हम लोग थोड़ा सा बैठे हुए हम लोग एकेडेमिया में हैं. मिजाज हम लोगों का ज़रा इंडस्ट्रियल सा है. लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स आपको सफदर साहब ने भी बताया, डॉक्टर हसन ने भी बताया, सो उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को हम अपने एक डिफरेंट तरीके से और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस तरीके में जितनी मसले मसाइल रहे हैं, सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इट वाज वेरी ओरिजिनली आवर ओन आइडिया. तो उसके मसले मसाइल देखकर सो व्हाट आई वुड ट्राई टू टॉक अबाउट इज़ के जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इस वक्त इट्स अ बज़वर्ड, और किसी ने सफदर साहब से पूछा भी था कि इट्स ऑल सॉफ्टवेयर, तो आप माइक्रोचिप को उससे कैसे कनेक्ट करेंगे. तो मेरी टॉक ही मोरलेस उसी चीज़ के बारे में है. बीच बीच में मैं थोड़ा सा डिटूर लेता रहूँगा, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं डॉक्टर हसन ऑलरेडी टच कर गए, लेकिन I would just repeat them from our perspective. So आप जैसे देख रहे हैं पहले मैंने लिखा हुआ है instead of writing professor और HOD, मैंने पहले फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ए स्टार्टअप लिखा हुआ है. सो वही जो मैं कह रहा था कि मिजाज मेरा और मेरी टीम का जो इंडस्ट्रियल सा है, PhD भी मेरा इंडस्ट्रियल सा था. I was lucky to have worked with ST Microelectronics analog devices. So what we have been trying to do is to establish an extra leg, spin off कर जाएं, वहाँ पर sustainability मिल जाए. So I would just take you through the journey, and you would realize कि जैसे हसन साहब डॉक्टर हसन कोशिश कर रहे थे आपको कन्विंस करने की कि it's pretty much doable here. So let's go through this. Okay, so next slide. Okay, so are the slides changing? Yes, slides are changing. Okay, great. So थोड़ा सा मैं स्पीकर और अपने बारे में और टीम के बारे में. सो स्टीव जॉब्स ने कहा था कि इट्स नॉट अबाउट अ गुड आइडिया, इट्स एक्चुअली अबाउट अ गुड टीम. सो आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल जिन्हें कि पाकिस्तान में एक अच्छी टीम मिल गई, और फिर वो रुक भी गई. जो डॉक्टर हसन भी आपको कह रहे थे कि HR ट्रेनिंग तो हो जाती है, उनको रिटेन करना पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, और स्पेशली हालात जिस तरफ जा रहे हैं उधर तो शायद आगे ये मसला बढ़ेगा. तो जो हमसे इकोसिस्टम माइक्रोचिप और माइक्रो सिस्टम का एसोसिएटेड है, उसकी ना मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा. सो आई वुड डेयर नॉट टू शो आईफोन, आई वुड डेयर नॉट टू टॉक अबाउट ग्लोबल इंडस्ट्री, एंड व्हाट आई वुड ट्राई टू शो यू, क्योंकि मैं उन लोगों में से जब मैं थोड़ा सा मुझे कोई बताता था कि एप्पल ने आईफोन बनाया है तो अगर इस चीज़ पे काम करोगे, तो आई यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड. आई वाज लाइक कि यार मुझे ये बताओ कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ. सो आई वुड ट्राई टू गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ स्टफ crippled, broken, incomplete, yet it's our own indigenous stuff. So I would just give you glimpses of that to tell you that there is a starting point and there is a way कि जिधर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं. तो अब बाकी जो हम एक ख्वाब देख रहे हैं since 2016 कि AI को आपका बिल्कुल जिसका भी वो सवाल था वो बिल्कुल सही सवाल था कि AI को बंद कर दिया जाता है, ये बैक एंड पर सॉफ्टवेयर में डेटा प्रोसेसिंग में बंद कर दिया जाता है. सो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जो ज़्यादातर जो ऑलमाइटी अल्लाह की क्रिएशंस हैं
उसमें जो embedded intelligence है वो front end पे है, so that means कि it's right there in the hardware. तो bio-inspired systems को किस तरीके से microchip वगैरह में connect किया जाता है उसको. I would also share a success story of our spin-off और students कहाँ से start करें, and then I would just conclude. सो जाहिर है ये मेरी टीम इंसिस्ट करती है. सो इसमें आपने ऑब्वियसली, मैं आपको ये नहीं दिखा रहा कि वो जो फाउंडर, प्रोफेसर और एचओडी और फादर और सन और हस्बैंड, सो जो है ना ये, और परहैप्स जितनी आजकल मैं प्रेजेंटेशंस दे रहा हूँ, आई शुड आल्सो राइट प्रेजेंटेड. What I want you to look at is the student part. So I mean, I was and I still am, and I think कि वो मामला ऐसे ही रहेगा आखिरी दम तक. There is so much to learn. So इसको बजाय इसके कि मैं इसको I make it about myself. So what I would like to show you is this. So it's a team, and this team, when I came back to Pakistan, we were able to convince. I started working in NESCOM, so and then in like 3 to 4 years, we were able to convince a Silicon Valley company, Open Silicon कहलाती थी. हमने उनको कहा कि भाई अब आपके एनालॉग आईपीज हम बना देंगे. So they actually got convinced at that time, and they handed me as the manager of analog group. They handed me $1 million at that time, and they asked me to make an analog design group of 70 people. Obviously, I tried my best, and I was teaching as a visiting faculty in NUST at that time. So we ended up making a group of 7 people, जो कि मेरे अपने students ही थे, and I went around taking tests in LUMS, in UETs, in other places. So you would be surprised to hear कि 50 number के test में जो the maximum marks that anybody ever achieved was 18 marks. So our American CEO was quite upset with me, and he always thought that I am making a rather idiotic test जिसमें लोग fail हो जाते हैं, and I'm not really interested in hiring people. So the problem was कि जो curriculum universities वगैरह में पढ़ाया जाता था, और शायद अभी भी majority में जो पढ़ाया जा रहा है, that's really not just outdated, that's extinct, or any other stronger word अगर कोई मिल जाएगा मुझे तो मैं यूज कर लूंगा. लेकिन ये कि मॉसफेट्स जो कि अब अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर रहे हैं, वो ही कोई नहीं पढ़ाता था. जंक्शन डिवाइसेस पढ़ा के लोग छोड़ देते थे. एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट मेकिंग सर्किट्स इन 28 नैनोमीटर CMOS एनालॉग सर्किट्स, जिसमें कि डिबल जैसे सेकंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स आकर आपके एनालॉग सर्किट्स की ऐसी तैसी कर देते हैं बैक इन 2012. So it was a very interesting scenario कि उसमें we had the money, we had the company, we had the project, and the local market failed. And obviously, if I started training people at that time, तो मैं फिर बैठ के डिजाइनर का काम नहीं कर सकता था. तो we couldn't really, मतलब हमें जो जिस स्केल पे डिलीवर करना था, couldn't really deliver it. I think I can pretty confidently say कि पाकिस्तान में एक ही दफा कमर्शियल लाइसेंस खरीदा गया है केडेंस के front end, back end, custom IC design का, and that was back in 2012, and we bought it for $0.2 million, and that was after almost 90% concession from Cadence. So आपको डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो एक्चुअल कमर्शियल लाइसेंसेस हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, $14 million का बेसिकली जो फुल बंडल है वो है. So that license that we bought for $0.2 million back in 2012 was 1 year, single node, and just custom design suite. So but the scale that they wanted. So उसके बाद बहुत अच्छी चीजें हुई. एक अच्छी चीज तो ये हुई कि मुझे वालदा ने कराची ऑफिस बुला लिया, and I had to start from the scratch. So we started a research group. करने को कुछ नहीं था. So we went around, we applied for funding, and I would show you क्या funding वगैरह मिली. So I just wanted to tell you कि it's teamwork. So what I'm going to show you now is a new story that started in 2014. तो PhD तो करके मैं 2009 में आ गया था. NESCOM हुआ, Open Silicon हुआ, but then what we are doing here in this institute, and perhaps planning beyond this institute, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा. So these are the 9 microchips, as you can see the timeline. So we started this group in 2014, and we got lucky कि हमें Saudi funding मिल गई. We delivered a couple of ICs for them in 2015, and then Saudis were happy with that, so they invited us, and they made us part of a rather big project
नेशनल लेवल प्रोजेक्ट है जिस पे अभी भी हम कनेक्टेड हैं और वो कोलैबोरेशन स्केल अप कर रहा है. सो दे आर सऊदीज आर को फंडर्स ऑफ मैनी ऑफ आवर आईसीज, जो आगे बात होगी. So the IC that you see smack in the middle, this January 2017 IC, that's WPT vaccine monitoring ASIC. That's the one that Dr. Rashid funded us back in 2016, and we delivered this IC in 2017. So it was a big support from him at that time. So the second row left most IC that you see is again from UAE University Al Ain. So Dr. colleague, Dr. Azam Beg, funded us there. So the right one at the top, that's a very funny IC in the sense that that's basically from Air Force Research Lab of US. And we got it from through a middle person, and we delivered it while designing it here in Pakistan. So that's an interesting thing. So while combining all this work, we went to Ministry of Telecom, Ignite, and we asked them कि भाई ये सर्विस प्रोजेक्ट्स तो कर लिए हमने, अब शक हो रहा है कि एक दो आईसीज कुछ बनाना आ गया है, तो आप अगर हमें अब फंड कर दो तो वी कैन एक्चुअली गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्योंकि होता है ये सर्विस प्रोजेक्ट के हर प्रोजेक्ट की अपनी डायरेक्शन होती है. सो जैसे सऊदी के साथ हम इस लेवल पे भी पहुंच गए कि यूएस पीटीओ के पेटेंट्स भी आ गए, पब्लिकेशंस भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इट वाज देयर प्रोजेक्ट इवेंचुअली एंड द नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. So somehow Ministry of Telecom felt kind of, obliged, and they funded us almost 50 million rupees. So 5 करोड़ रुपए बन जाते हैं. उन्होंने हमें 2017 में ये पैसे दे दिए और उन्होंने हमसे कहा कि आप एक, so we felt, गूगल वाला जो है, I'm feeling lucky today वाला. So we felt lucky at that time, and we proposed a very aggressive system. Instead of going for a chip, just a microelectronics, we proposed a micro system. तो हमने कहा भाई हम मोनोलिथिकली आपको सेंसर्स भी इसी माइक्रोचिप में डाल देंगे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द चिप टॉप लेफ्ट, दैट्स द चिप. सो हमने कहा हम मैम सेंसर सीमोस स्टैक के अंदर बना देंगे, आईआर सेंसर इसके अंदर बना देंगे, बायो सेंसर इसके अंदर बना देंगे, और उसके साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना देंगे. अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका डिज़ाइन स्टार्ट हुआ लेट 2017 अर्ली 18, ये टेप आउट हुई अर्ली 2020, टेस्ट हुई. इसकी सॉफ्ट आईपी सेल के काफ़ी मेच्योर फेजेस से गुजर रही है विद सऊदीज. इससे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आगे ट्रिकल डाउन करके और स्केल अप होकर, जो मैं आगे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ. सो दिस स्लाइड इज अबाउट सर्वाइवल इन पाकिस्तान. सो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू जस्ट कीप, लेट्स से आप, हाँ मतलब बहुत आपने ज़बरदस्त माइक्रोचिप बना ली है, सब कुछ कर लिया है, और देयर इज लेट्स से कंटिन्यूस ट्रेल ऑफ फंडिंग आपको मिल रही है, लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल वुड आस्क यू कि भाई ये चिप कहीं लगी है, कहीं अप्लाई है, कोई डब्बा है ऐसा जैसे. सो दैट्स अ लॉन्ग गेम. आप जब उसको समझाने की कोशिश करते हैं, देखें देखें मैं आपको बताता हूँ ऐसे होता है, देखें वो कहता है भाई आप ये नहीं बताएं, आप बस यस या नो में जवाब दे देंगे लगी है. सो ऑब्वियसली आप कहते हैं यार अभी नहीं लगी, वो तो अभी बिग ब्रदर ये वो पता नहीं मास प्रोडक्शन. सो देन देयर लाइक कि अच्छा नहीं तो अभी तो आप बस बेसिक रिसर्च, अब वो आप जवाब देना मुश्किल हो जाता है मतलब. सो अब ये तो एक एंगल है, लेकिन वी वर काइंड ऑफ पुश्ड टुवर्ड्स दिस एंगल कि हमने सिस्टम डिज़ाइन करने थे, क्योंकि हमारा मेरे सर पे एक डिपार्टमेंट रख दिया गया था बैक इन 2014, एवियोनिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया था. एंड ऑब्वियसली वी हैड नथिंग, मतलब वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, कोई लैब नहीं थी और बहुत महंगी लैब्स थी. सो वी स्टार्टेड मेकिंग avionics equipment ourselves. Bottom right पर आप जो देख रहे हैं, this was available from National Instrument for $44,000. हमने 75,000 रुपीज़ का बना लिया. ज़ाहिर है $44,000 के बाद किस स्टूडेंट को हाथ लगाने देते हैं हम फिर. सो फिर इसी तरीके से इन्हीं सिस्टम से भी सो व्हाट वी डिड इज कि हम आईसी के कम से कम एब्स्ट्रैक्शन लेवल से बाहर आए, हम सिस्टम लेवल पे गए, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्टीज अप्लाई करी, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल लेवल तक आए, फिर हमने मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल के पे गए. एंड नाउ दैट हेल्प अस इन आवर जर्नी टुवर्ड्स स्पिन ऑफ एंड स्टार्टअप, जो मैं आगे थोड़ा सा दिखाता हूँ. सो दिस इज़ अ टीम जो कि जिसमें एक्सपीरियंस है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का भी है, इलेक्ट्रो मतलब सिस्टम डिज़ाइन का भी है, और थोड़ा और हम जो है क्रॉस डिसिप्लिन्स की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, कभी मजबूरी में और कभी खुशी से. लेकिन नॉट ऑल वाज शाइनी, नॉट ऑल वाज ग्रीन. सो ये हमने बड़ी जो है चालाकी से खाली दो आपको रेड segments दिखाए हैं, जिसमें we went down pretty hard. Back in 2015 we were promised by Saudis
a few million reals. That was a pretty large funding at that time. So they sent me back and they asked me to open a design center here in Karachi, and I was quite excited and all that. लेकिन आपको शायद याद होगा 2015 के आखिर में यमन जंग हो गई थी. So it all went down, and it was, I think, the first time in my life I became to know के depression कहते हैं किसको है. तो वो basically we tried to fight hard, लेकिन obviously अब एक मुल्क जंग में चला गया. So the first thing that they cut off is like foreign funding. उन्होंने उठा के उन्होंने कहा भाई अब yeah. So that was one of the issues. Initially there were promises from Open Silicon and Escom as well. लेकिन अगर what I'm trying to show here कि the team, I mean जो team मैंने आपको शक्लें दिखाई हैं, these are very young people. सो इट्स नॉट के हम बहुत यहाँ पर हमारे पास कोई 15 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं. ये ज़्यादातर 80% ऑफ माई ग्रुप आर माई ओन ग्रेजुएट्स, जिनको मैंने खुद ट्रेन कराया, फिर अपने साथ लगाया हुआ है, हायर किया हुआ है, या इन्होंने मुझे हायर किया हुआ है, पता नहीं. लेकिन ये कि बेसिकली सो दीज यंग पीपल दे फॉट हार्ड, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इवन आफ्टर सच स्ट्रॉन्ग डिप्स कंटिन्यूसली फंडिंग्स विन कर रहे हैं, और उन फंडिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं रेपुटेशन में, डिलीवर कर रहे हैं. मतलब फंडिंग विन करके बेसिकली आपने डिलीवर भी करना होता है, वरना फिर बहुत बुराई आती. तो डिलीवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और जो है अभी तक अल्लाह का करम है कि वी हैवंट हिट द नेक्स्ट डिप येट. तो इट्स इवॉल्विंग प्रोसेस, बट इट इज डूएबल इफ यू हैव अ गुड टीम, सिंसियर टीम. आगे मैं आपको इनकी कुछ अचीवमेंट्स दिखाता हूँ. सो दिस इज अ चिप. अब जैसे आप काफ़ी काफ़ी दफ़ा आप ये समझेंगे बस चिप आ गई है और आप उसको सामने रखेंगे और चिप आपसे बातें करना शुरू कर देगी. सो दैट्स डजंट रियली हैपन. एक दिन आए चैट जीपीटी पे आप लिख दें और चिप जो है वो खुद चल के खड़ी हो जाए. तो द प्रॉब्लम विद माइक्रोचिप इंडस्ट्रीज के 30% एफर्ट जो है ना वो डिजाइन में, जो 70% गोज इन एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ द चिप, एंड दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट. So that's where even a single wire can actually make you cry for a couple of days. जो है ना output नहीं आ रही. So what I'm just trying to show you है कि chip है, उसके वो complicated से test setups हैं जो कि locally बने हैं और इसी टीम ने बनाए हैं. So just a zoomed in version of. अब जो चिप थी जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर कुछ सेंसर्स अंदर ही लगे हुए हैं. सो ये उसका वाइब्रेशन टेस्टिंग है, उसके अंदर वाइब्रेशन सेंसर अंदर ही है. सो ये पूरा वैक्यूम बेस्ड वाइब्रेशन सेटअप यहीं पे हमें लोकली ड्यूरिंग कोविड टाइम बनाया हमने. सो दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग कि कभी ऐसी भी नौबत आ जाती थी कि चीज़ें स्मगल, इक्विपमेंट स्मगल हुआ है. तो यस, एवरीथिंग फॉर किंग क्वीन एंड कंट्री. तो ये कि ये उसी का छत पर आप सेटअप देख रहे हैं. तो ऐसा वक्त भी आया है कि जब वो चिप को लेकर हम कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाता, लेकिन दोज आर काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बाय आवर क्लाइंट, जो जिनकी पाइपलाइन है सऊदी, उस पर भी है. लेकिन तो ये वो मैं दिखा रहा हूँ जो हमने छत पर छोटा मॉडल बनाया था उन्हीं की पाइपलाइन का, उस पर चिप लगी हुई है उस पर. तो वही मैं कह रहा हूँ आपको कि द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल टेस्टिंग द चिप, दैट्स ऑल्सो बिग डील. तो आपको चिप के डोमेन से बाहर आना पड़ता है, उसके पीसीबीज बनते हैं, उसके सिस्टम्स बनते हैं, एंड देन डेटा एक्विजिशन और फिर डेटा एनालिसिस. मतलब आप डेटा को गलत तरीके से देखना बहुत आसान है. डेटा एनालिसिस देन डेटा रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, ये दिस इज द अदर पार्ट ऑफ दैट सेम चिप. इसमें बायो सेंसिंग हमने उसको प्रपोज करी थी कि हम एक बायो सेंसर बनाएंगे, एंड वी वुड एक्चुअली कम अप विद अ किट जिसमें आप ग्लूकोमीटर की तरह उसको जेब में लिए घूमेंगे, और आपको किट बता देगी. उस वक्त कोविड के टाइम पर एक कॉन्सेप्ट आया था इम्यूनिटी पासपोर्ट, यानी कि आप जेब से अपनी किट निकाला करेंगे, सुबह देखेंगे भाई मुझे कोविड शोविड नहीं है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ. और आप सुबह देखेंगे कि भाई मुझे तो कुछ लग रहा है तो मैं ऑफिस नहीं जा रहा, बस आज घर से काम करता हूँ. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस. इसके पीछे पर्सनल इंस्पिरेशन थी. मैं इस्लामाबाद से आया, बच्चा बीमार, ये हो गया वो हो गया, यहाँ पता चला यहाँ गर्मी में नेगलेरिया होता है, किसी को पता नहीं होता है क्या होता है क्यों. सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन कि भाई कम से कम आदमी को ये तो पता हो कि उसको मारा किस चीज़ में. सो बायो सेंसर, ऑन चिप बायो सेंसर, प्रीटी सक्सेसफुल. लेकिन अगेन इसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल हुई. डॉक्टर्स के पास हम यहाँ जब फील्ड में लेकर गए, सो अगेन दे वर लाइक कि भाई इसका हम अब माइक्रोचिप का करें कैसे, आप इसको सिस्टम में कन्वर्ट कर लें. कोविड का टाइम था, इट बिकेम वेरी टफ. जो बेसिकली इस टाइप के मसले मसाइल थे कि जो एसओपीज आई हुई थी वो कोई लैब ही ओपन अप. सो व्हाट वी डिड इज दैट दिस वाज आवर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बायोसेंसर. हमने कहा यार एक स्टेप नीचे उतरते हैं माइक्रोचिप से. सो दैट्स व्हाई आई शोड यू टीम हैज
expertise that crosses abstraction levels. ऐसा नहीं खाली ट्रांजिस्टर लेवल पे काम करे. We took a step back and we went to National Center of Artificial Intelligence. हमने उनको सर देखें बायो सेंसर ऑन चिप बना चुके हैं. वी नो द मार्केट, वी नो कि इसकी ज़रूरत है, और वी नो कि ऑन चिप बनाना अभी ज़रा मुश्किल होगा. So just fund us and we are going to give you a glucometer sort of device based on off-the-shelf components. So this was the architecture. It would be supported by a back-end AI server जिस पे कि मशीन लर्निंग हुई भी होगी और उस पे नोन केसेस थ्रू अ मेडिकल पार्टनर पड़े हुए होंगे. फ्रंट एंड डिवाइस आप स्लाइवा से या ब्लड से या म्यूकस से आप एक सैंपल उसको एनालाइज करेंगे. ग्राफीन सेंसर हमारे यूके के पार्टनर बना रहे थे और एआई सर्वर उसको जो है ना करके आपको देगा. सो दिस अल्हम्दुलिल्लाह दिस डिवाइस दिस स्टार्टेड इन 2021. एनसीआई ने इसको फंड करा. दे गेव अस ऑलमोस्ट लाइक 15-16 मिलियन रुपीस. और उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज अ क्लिनिकली टेस्टेड डिवाइस जिसकी बेसिस पर हमने अभी हमें एक और मैं आगे आपको दिखाता हूँ, हमें एक और फंड हमने विन करा है थ्रू स्टार्टअप प्लेटफॉर्म. सो ये उसी उसी डिवाइस की कुछ इंटरमीडिएट शक्लें हैं जो कि जस्ट टू शो यू कि ऐसा नहीं है कि वो एक कूल किस्म की फाइनल डिवाइस बन गई है. सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज लाइक कि बिल्कुल अगली तरीके से शुरू होता है एंड इवेंचुअली थ्रू मल्टीपल इटरेशंस यू रीच समवेयर जिधर के आप शक्ल दिखाने के काबिल हो जाते हैं. सो देयर इज नो नीड टू गेट डिप्रेस्ड यार ये मतलब हम तो जब कुछ हाथ लगाते हैं ऐसे नहीं होता. सो जस्ट सम सर्टेन रिजल्ट्स जो कि आई एम शोइंग हेयर के मतलब देर आर एक्चुअल प्रैक्टिकल रिजल्ट्स जो कि हमने अपनी लैब में भी करें. बायोसेंसिटिव रिजल्ट्स हैं, एनारोबिक चेम्बर में हैं, ये है वो है. लॉन्ग स्टोरी, लेकिन इस पर हम कभी आई जस्ट वांट यू टू यू नो शो यू पिक्चर्स सो दैट यू रिमेंबर कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बायोसेंसिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एनारोबिक चेम्बर एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. सही है, लेकिन वही वाला सवाल कि भाई ये इस सारी चीज़ों का मतलब माइक्रोचिप से क्या ताल्लुक है, आप क्या क्या चाह रहे हैं. तो अब जैसे जाहिर है डॉक्टर हसन ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको मार्केट भी आपको बता दी. सो ऑब्वियसली आई आई देयर इज़ नो नीड कि एंड आई थिंक मैं एग्री बताता भी तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया. लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ बिलियंस ऑफ पीसेस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जिस पे के मुल्कों में अब लड़ाइयाँ हो रही हैं. स्ट्रेटेजिकली इसको यूज़ किया जा रहा है एंड इट्स अ मैटर जिधर के हम अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से बहुत पीछे हैं. तो कई दफ़ा होता है कि आप क्योंकि आगे हों तो कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, you're ऑलरेडी डूइंग. तो बहुत स्कोप है इसमें. हमारी मतलब सदियों सदियों की तो खैर नहीं कह सकता, दिहाइयों की नालायकी की वजह से. सो बट दिस इज समथिंग दैट परहैप्स योर जनरेशन हैज मिस्ड. दिस इज व्हाट आवर जनरेशन सॉ. तो मैंने भी पहली जो यूएसबी खरीदी थी दैट वाज बैक इन 2000. और उस वक्त वो यूएसबी थी खाली 16 MB की, और उस वक्त यूएसबी को स्टेटस सिंबल समझा जाता था. 1800 की आई थी वो, और लोग उसका एक लॉकेट सा बना के ना गले में डाल के फिरते थे कि मेरे पास यूएसबी ड्राइव है, बताओ कहाँ से डेटा उठाने. सो दैट वाज अ बिग डील. और अब आप उसी उससे कम कॉस्ट में उसी फॉर्म फैक्टर में आप टेराबाइट्स देख रहे हैं. तो ये जाहिर है कोई जादू वादू नहीं हुआ है, मिनिचराइजेशन की वजह से हुआ है. यही मिनिचराइजेशन आप अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं. मल्टी प्रोसेसर कोर्स आप मोबाइल में लिए घूम रहे हैं. एक एक प्रोसेसर कोर में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स बैठे हुए हैं जो कि बिलियंस ऑफ टाइम्स टिक करते हैं इन अ सेकेंड. अब बिलियन जो है ना वो हमने छोटा वोटा क्योंकि हमारे मुल्क में ज़रा करप्शन वगैरह का है तो बिलियन छोटा नंबर कंसीडर हो जाता है. लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप जिस दिन पैदा हुए हैं और आपके वालिद साहब आपके अकाउंट में 1 रुपया डालते हैं हर सेकंड में, तो आपको बिलियनियर बनने में 32 साल लग जाएंगे. इट्स सच अ बिग नंबर. हर सेकंड में एक नंबर ऐड हो रहा था, तो 32 साल लग गए आपको बिलियन तक पहुंचने में. तो इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर. बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड डूइंग समथिंग बिलियंस ऑफ टाइम एवरी सेकंड. सो जस्ट इमेजिन द कंप्यूटेशनल पावर जो कि आप अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं. अब इसको यूज क्या करना है. सो स्केलिंग चल रही है, छोटी हो रही है डिवाइस, करीब आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है. what we are involved in is what you see in purple color, combining SoC and SIP. So if you go vertically down, that's Moore's law, Moore जिसको कहते हैं कि आपके डिवाइस छोटी हो रही है और डिवाइस डेंसिटी बढ़ रही है, उसी स्पेस में ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स आते जा रहे हैं. राइट साइड पर आप जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी नहीं हो रही. वो एनालॉग है, RF है, सेंसर है, ये वो, उसका ट्रांजिस्टर स्केलिंग से इतना. सो अ हाई वैल्यू सिस्टम इज व्हाट कि आप जिधर आप ये मिनिचराइज डिजिटल डिवाइसेस को 10 मिनट्स आप जो है वो कंबाइन कर दें
जो है वो इस टाइप के सेंसर से मोनोलिथिकली या आरएफ कंपोनेंट से या पैसिव से इस टाइप. So that's called what we call as, let's say, a system in package, a high value system package, and that's what we are trying to pursue now. अच्छा, इसकी डिजाइन साइकिल आपको जाफर साहब ने भी बताई, आपको डॉक्टर सैफ ने भी, हसन सैफ ने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से. सो वी आर ऑन द लेफ्ट साइड, द फुल कस्टम एनालॉग डिज़ाइन साइड. हम डिजिटल साइड भी करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वी आर ऑन द लेफ्ट साइड. और उससे फुल कस्टम फ्लो से गुजर के वी हैव एन अनटेस्टेड चिप, एंड देन वी गो थ्रू दैट रिगरस टेस्टिंग एंड ऑल दैट. So that's what's happening. इसमें जो आपको शुरू में, how do you start? You need skilled people जिनको पता हो कि पहले मशरिक का है मगरिब का है. फिर you need specialized tools, synopsis, cadence. डॉक्टर हसन ने भी इसका जिक्र किया. Then you need to have partnership with fabrication facilities. मतलब ये चीज़ आपके बराबर next door neighbor जो कि मोल्ड बना के आपको कोई चीज़ बना देते हैं. We are talking about nanometer tolerances. तो ये these are specialized fabrication plants अराउंड द वर्ल्ड जिनके साथ आपको, एंड इट्स नॉट एज सिंपल कि वो बस आपके साथ पार्टनरशिप कर लें. जस्ट ट्राई टू गो अराउंड एंड आस्क 28 नैनोमीटर पीडीके फ्रॉम अ फैब while sitting in Pakistan. So the answer that you would get वो शायद ना काबिल अशात ना काबिल तबाद होगा. तो so again the Dr. dream. Arslan, जी जी. we have last 10 minutes remaining. जी बिल्कुल, 10 मिनट में मैं कंक्लूड कर दूंगा. Thank you. ओके, सो द ड्रीम के एआई को फ्रंट एंड पे कैसे लाया जाए. तो ये आप एक टिपिकल चेन देख रहे हैं जिसमें कि बेसिकली सिग्नल सेंसर लगा हुआ है, सिग्नल प्रोसेसिंग चेन है ये, जिसमें फिर आपका एनालॉग रीड आउट चैनल है, ऑप एम्प्स हैं, सर्टेन फिल्टर्स हैं, फिर एडीसी है, एंड देन यू गॉट दैट डिजिटल डोमेन जिसके अंदर बैठकर आप सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह करें. सो अब अगर हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम को देखें तो द मेन डिफरेंस के जो कि ऑलमाइटी क्रिएटर ने रखा है वो ये कि लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इज अवेलेबल राइट एट द फ्रंट एंड. फॉर एग्जांपल जो आपका ह्यूमन एयर है, वो जब आप सो रहे हैं तो इट डजंट डू दिस कि आपके ब्रेन को ना हर सुनने वाली आवाज भेजे चले या भेजे चले. अब बेसिकली ब्रेन ने आपको सुलाया इसलिए कि वो कुछ और काम कर सके बॉडी रिपेयर वगैरह में. अब वो कान से हर वक्त सुनता रहेगा तो उधर एनर्जी बहुत लगेगी. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपका जो कान है वो सिर्फ वाइट नॉइस को फिल्टर करता रहता है. और इन 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 केस कि जब कोई इवेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ है, कोई चीज गिरी है, ग्लास गिरा है, कुछ हुआ है, तब आपको ब्रेन को सिग्नल भेजता है भाई अब आप उठें और उठ के देखें. सो दैट्स एम्बेडेड इंटेलिजेंस राइट एट द फ्रंट एंड, कि वो आपको कहता है कि भाई आप देखें, आप अब काम का सिग्नल है. सही है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने किसी तरीके से जो न्यूरॉन्स थे उसको हमने फ्रंट एंड पर लाकर मॉडल करना है. सो लेट मी जस्ट स्किप दिस पार्ट, लेट मी स्पेंड सम टाइम हियर. कि अब जो आपकी कन्वेंशनल वॉन न्यूमन कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है वो यही है कि सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पैरेललिज्म ऑफ कोर्स. कंप्यूटेशन मेमोरी अलग है, कंप्यूटेशन अलग है, पावर मेमोरी अलग है. सही है. अब जब न्यूरोमॉर्फिक आर्किटेक्चर इज बेसिकली बायो इंस्पायर्ड, ब्रेन इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर. सो इसमें क्या है, पहली चीज तो ये कि इट्स एन एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर. ऐसा नहीं है कि आपका ना ब्रेन बार बार जाके आपकी उंगली को चेक करेगा भाई उंगली में पिन तो नहीं चुभी, सब सही है, बार बार वो ऐसा नहीं करेगा. सो इट्स सॉर्ट ऑफ एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन. जब पिन चुभती है देन विद इन मिली सेकेंड्स आपके ब्रेन को सिग्नल आता है और आप अपना हाथ वापस. सो वी हैव टू मिमिक दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर राइट एट द फ्रंट एंड. तो उसके लिए समझना होगा इट्स इवेंट ड्रिवन, मैसिवली पैरेलल है. न्यूरॉन्स के पास अपने पास साइनाप्सिस जो है, उनके अपने पास मेमोरी है, उनके अपने पास छोटी मोटी प्रोसेसिंग पावर है. So that's massively parallel distributed asynchronous architecture जो कि अगर let's say try to bring intelligence to the front end, तो उसके लिए अगर हम कुछ common scenarios देखें जो कि I think we lost connection with. Okay, so I think it's again. Dr. Arslan, are you there? जी जी, I think I lost. जी Okay. जी, आवाज आ रही है.
Yes, you are back. मैं इसको लगाता हूँ दोबारा एक मिनट. And let me just try to wrap it up in 5 minutes. तो ये रहे और स्क्रीन शेयर ये रहा. Yeah, सही. So now can you see the screen? It's visible. Okay. So let's just talk quickly कि हमें बायोसेंसिंग की. फॉर एग्जांपल आप गला खराब होता है. द बिग क्वेश्चन इज कि भाई 2 दिन हो गए, बुखार है, वायरल है, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक खाऊंगा ना. बैक्टीरियल एंटीबायोटिक मिसयूज हैज रिजल्टेड इन XDR बैक्टीरियल स्ट्रेन्स इन पाकिस्तान, जो कि किसी एंटीबायोटिक से अब मर ही नहीं रहे. और ये खाली यही दुनिया के 5 मुल्कों में ऐसा हो रहा है. हॉस्पिटल आप जाते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लग जाता है, क्योंकि बड़े बड़े अस्पताल भी बायोसेंसिंग नहीं कर रहे अपनी ओपीडी की. आप बच्चे को पानी डाल के घर में बिठाते हैं अपने, तो आपको नहीं पता कि पानी में मलेरिया है कि नहीं. इसी तरीके से देयर आर मेनी डेली लाइफ एग्जांपल्स दैट पॉइंट आउट कि वी नीड टू सेंस एंड मॉनिटर अ लॉट ऑफ प्लेसेस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो वो उसका बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मुसीबत क्या है कि आपने जैसे कोविड के टाइम में भी देखा कि वो जो रैपिड टेस्ट किट आई उसमें एंटीजन पड़ा होता था, वो एंटीजन आइसोलेट ही नहीं होता, तो वो जाहिर है आप लोकली नहीं बना पाते. सो अगेन द पॉइंट इज कि if you can, let's say, bet on the extraordinary computation power that is available inside electronics, और आप कहें भाई मैं उस reagent से जान छुड़ा लूंगा जिस reagent के साथ वो मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करना था, और मैं क्या करता हूँ कि उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मैं इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में कहीं ढूंढता हूँ. So what we have been trying to do in last 6 years is what you see uh, top bottom left. We have been trying to identify certain sweet spots for different bio markers. कि कोई बैक्टीरिया है जो किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे उसका डायलैक्ट्रिक बिहेवियर नजर आता है, उसकी इंपीडेंस नजर आती है. ग्लूकोज है किसी और फ्रीक्वेंसी पे नजर आता है, एंड दिस इज यूजिंग द सेम सेंसर विदाउट एनी काइंड ऑफ बायोफंक्शनलाइजेशन. एंड देन वी आर taking help from AI at the मिनिचराइज्ड वर्जन्स जो हैं अब वो मतलब एक्चुअल डॉक्टर्स के पास एक्चुअल पेशेंट्स पे इसका डेटा जनरेट हो रहा है. एंड दिस इज व्हाट वी सबमिटेड टू CIF इग्नाइट, एंड वी गॉट फॉर द नेक्स्ट 2 years कि हमने ग्लूको वॉच सब बनाना है जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर बायोमार्कर्स को टारगेट करके इलेक्ट्रॉनिक पावर को यूज करते हुए where I want to conclude के the technical thing कि why Ignite got convinced. मतलब हमने जो ये डिवाइस आप देख रहे हैं, मैं एक स्लाइड पीछे जाऊं, the device on the right, top right, that's an impedance analyzer. It costed us almost like 6 million rupees. ये नीचे जो है इस डिवाइस को हमने बनाना शुरू किया था when we proposed. तो हमने 30,000 का कहा था कि बन जाएगी, लेकिन आपका रास्पबेरी पाई 50,000 का हो गया, मिलता भी नहीं. impedance shield 60,000 की हो गई. So this device went above 150K very easily. So the problem is 150K का कोई क्यों खरीद के, मतलब जब ग्लूकोमीटर एक इनमें से 2,000 का मिल रहा है. So then everybody would like यार कर लेंगे, छोड़ो जाने दो, होने दो, ग्लूकोज होने दो बायोमार्कर, कुछ दिन बीमार पड़े रहेंगे. So what we proposed is कि हमने कहा कि after all this we have found out certain sweet spots, and we can optimize and we can go for a optimized co-design of hardware and software where we can actually optimize the cost. And this is we showed them certain numbers, certain figures, certain hardware and all that sort of stuff. So what I'm trying to show here using arrows is कि हमने results से sweet spots identify करे. हमने कहा भाई हार्डवेयर में ये चीज महंगी थी ना, अब देखो उधर पूरा स्वीप करने की जरूरत नहीं है, so you can optimize it. So what the device that we propose is like just a few thousand rupees. So spin-off, this is the device that actually we are inshallah going to come up with for Ignite in next couple of years, and that's going to be inshallah through our startup platform. So it is definitely possible. Spin-off मतलब हम academic sector से बाहर आ रहे हैं. It's a comfort zone. It has its own trade-offs, overheads and all that sort of stuff. तो obviously startup का failure rate आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, risk होता है, ये होता है. But if you can get a reasonable amount of funding within the first year of incorporation of a startup, that's a good success story in Pakistan. And that's a success story जो कि microchip से यहाँ तक पहुँची है.
सो वेयर टू स्टार्ट एज ए स्टूडेंट, हेयर टू स्टार्ट। तो जो कि बहुत सारे लोगों ने आपको ऑलरेडी बताया भी। तो मैं जब पीएचडी स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे मेरे सुपरवाइजर ने 2 ट्रांजिस्टर्स ऑप्टिमाइज करने को कहे थे। दीज आर कपल ऑफ पी मॉसेस, जो कि उसने एक मुझे सोर्स फॉलोअर बनाने को कहा था, एंड आई गॉट प्रीटी अपसेट। मैंने कहा यार मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, फ्रॉन्ट ऑफर के साथ काम कर चुका हूँ, मैं एनईडी का ग्रेजुएट हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, क्या समझ रहे हो भाई। तो उसने कहा कि भाई जाओ करके लो। अच्छा, एक एक दो दिन गुजरे, गेन ऑप्टिमाइज हुआ, फिर उसने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा पैरासिटिक ऐड हो गई, अब दूसरी चीज ऑप्टिमाइज हुई। उसने कहा यार इसका तो पीएसआरआर सही नहीं है, ये आप क्या करके ले आए। उसके बाद मुख्तलिफ उसने कहा भाई बॉडी इफेक्ट है, ये है वो है। सो इट इट टुक मी ऑलमोस्ट 2.5 months to just optimize couple of transistors। उसके बाद भी मैं जब सीना चौड़ा करके गया हूँ, मैंने कहा भाई ये लें आप बेस्ट सोर्स फॉलोअर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसने कहा यार बेस्ट वेस्ट नहीं है, आपको जो मैंने स्पेक्स दी थी उसके मुताबिक इट्स अ गुड बैलेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ्स, सो दैट्स इट। मतलब दैट्स व्हाट ही वांटेड, मतलब वो आप ऑप्टिमल बेस्ट और ये वो, दैट्स अ स्टूपिड थिंग। जो है वो अपनी स्पेक्स और रिक्वायरमेंट के मुताबिक इट्स अ गुड बैलेंस। सो दिस इज वेयर यू स्टार्ट। यू हैव योर कोर्सेज, यू हैव योर फैकल्टी, you have your you have you need to go co-curricular as well, अड़ोस पड़ोस की चीजें देखें, curricular as well, but it is able through that। So as a student I would like to urge कि आप इसी पर बिलीव करके, जो बेसिक्स हैं they're very very critical। और ज़्यादातर चीज़ें वहीं आकर वापस फंसती हैं कि आपको बेसिक मॉसफेट नहीं आता, तो वहाँ पर आगे चीज़ें फंस जाती हैं। So thanks a lot, that was my pitch।